सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। त्यागः शान्ति अनन्तरम्। This is the 12th shlok of 12th chapter, which summarizes the entire teaching. So it's always good to remind what we are going through, especially the teaching. Then Arjun's Prarthana, which is our Prarthana, and the entire Bhagavad Gita is answer to that Prarthana. Karpanya dosho upahat svabhavah कार्पण्यदोषो उपहत् स्वभावः prachami tvam dharma sammudchetah पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। So Arjuna is saying, Bhagavan, I'm deluded, I'm emotionally weak. Karpanya dosh means emotionally weak. That's why I'm not able to decide what is my dharma, swadharma. And then he says, he's smart. He says, okay, now when you're explaining, at least tell me what is Shreyas in this situation, in the current state where I am in. What is Shreyas for me? So, and he said, and I commit that I am Shishyasteham Shadimantam. I am your disciple, and I have come here for the guidance. Shadimam, Shadi means it is related to study or buddhi. Dhi shabda jahan bhi aata hai, it is related to buddhi, and it is basically so. Actually, Shishya shabda bhi usi se, like, there is the same root. So I am here to learn. I am Shadimam. So please guide me, teach me, and enlighten me. Tvam prapannam. But I surrender. Prapannam is I surrender. Pranam, I am surrendered to you. So that is, here is the message that for learning to go through, we have to keep the ego aside, right? And that's the whole thing. Then till then, Arjun was giving some arguments. Now he realized that the arguments are not working. My mind is not quietening, even in spite of I am giving all the arguments. So he realized that there is something not right. So good, at least Arjun realized it at that moment, and that's what the whole, all the teachers says, all acharyas, all over Shastra, that in that state of mind where we are not balanced, look for help, look for assistance, like go to Shastra, go to teaching and find out what is right. And that's what, so, and in that answer, Bhagavan has told the entire Bhagavad Gita, which we are enjoying, right? So, so we completed last time 8th chapter. We'll just read the last shlok just to recap, and then we'll enter into 9th chapter. So 8th chapter was, so 7, 8, or 9. In fact, 10 will be a little different, but they are in line. So 7 is, we saw that's a Gyan Vigyan Yoga, where Bhagavan told what is Bhagavan's lower nature and upper nature. Lower and upper nature means it's not a kind of a quality-wise lower nature, but it's in outlook, in manifestation, we can say. So lower nature is entire Prakriti. Bhagavan says this is me, and the which is unmanifest, Chetana जिसे हम बोलते हैं, जो consciousness है, which is consciousness is unmanifest. Nobody has seen consciousness, but it is there, and that is also me. That is my higher nature. So lower nature is Prakriti. So that reminds me, Pankaj bhai, Prakriti का हमने कल देखा, आपने तो देखा प्रकृति क्या करती है. So let's do that Shanti mantra for all the people who got impacted by Helene and then Milton. So we'll say Sarve Bhavantu Sukhna once, and our prayers to, and Bhagwan's
Apara Prakriti should help them and guide them in right directions. So prayer for all of them. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukh Bhag Bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. So the key word here is Ma Dukh, Ma Kaschid Dukh Bhag Bhavet. Koi bhi, world is, sansar is suffering, but our prayer is that कि ये suffering जो है ये अलग चलती रहे, कोई nobody should be party to it. भाग में कश्चित भाग में it comes to your, so संसार तो जैसा है लेकिन ये दुख जो है लोगों के हिस्से में ना आए. माँ कश्चित दुख भाग में. That's our prayer. So anyway, for prayer for all that, that's what when Apara Prakriti, when I said, immediately मेरे दिमाग में that picture came, that hurricane and all those things. But the question comes, it's not unrelated, but the question comes, why Bhagavan is doing this? तो भगवान की अपरा प्रकृति तो ये हरिकेन और ये सब क्या है? So भगवान से आंसर इस भगवद गीता में भी आता है कि there is a law working and the law has its own course. So abhi hurricane is a, and we all know that, right? Even the wildfire is, the trees sometimes create wildfire because to sustain the entire forest. And this is a study done by biologists. So who knows, all these hurricanes and everything, there is to maintain the balance, Prakriti does. Or if we create imbalance, now we are saying all this ozone layer, and so this is because of that this is happening. So if we play with Prakriti's niyam, then yeah, there will be a consequence of that. But Prakriti doesn't do wrong for anybody. So it's a law. So maybe that's the law, it's working. So Bhagwan doesn't do कि किसी को नुकसान पहुंचाए. That's not possible. So anyway, so we finished 8th chapter, which was Akshar Brahma Yoga. So 7th chapter was Gyana Vigyan, means Bhagwan told Apara Prakriti, means the lower nature, which is the material world. That is also Bhagwan says, that is also me. And we'll see in the 9th chapter. So 9th chapter is extension or expansion of 7th chapter. In between, there is a 8th chapter. Arjun asked the question at the end of the 7th. Bhagwan told at the end of the 7th chapter that Brahm and Karma, all those things. So he said, oh, what is Brahm? What is Karma? And then he asked one question that, oh, how do I remember at the time of death you? That he asked that question. And then the entire 8th chapter actually is the answer to that question, that how I will remember you at the time of death. And then Bhagavan says, there is only one way. Akshar Brahma means unmanifest. Constantly keeping my name in the mind, even if while you're doing your karma. That's the only way you're going to remember me at the end of the life. And remember me at the end of the life means what? जब जा रहे हैं तो खुशी से जाए, आनंद से. That's it. There is no suffering in even leaving, because this is the body. Body is leaving. So that's what the question. And the entire 8th chapter Bhagavan told about imperishable or avyakt or akshar Brahma. And Bhagavan says, in all situations, maintain that equanimity, which is again, he's talking about 3rd chapter, karma phal. And that's what. So 2nd and 3rd chapter, we have to comprehend properly. Then all these things, later chapters, we can relate what Bhagavan is saying. So here is also last. So we'll read the last shlok of 8th chapter, which is recap, and then we'll go to the 9th chapter. So last 28th shlok of 8th chapter, which is Akshar Brahma Yoga. Vedeshu yaggeshu tapaschu chaiva, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव daneshu yat punya phalam pradishtam, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् atyeti tat sarvam idam viditva, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा yogi param sthanam upeti chadyam. योगी परम स्थानुमुपैति चाद्यम, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है.
whatever meritorious fruit is assigned to Vedas, sacrifices, austerities, and also to gifts, the yogi rises above all these by having known this and goes to the supreme primeval abode. So this यहाँ पर एक पुण्य फलम, and phalam is the result. So this is the actually if you zoom this word into, you get to third chapter. You have to zoom into this कि क्या कह रहा है भगवान. So entire third chapter Bhagwan talked about karma, karma, karma. Second and third, partly second but mostly third. So how do I that's the biggest baggage. And that's what we say when the 12th shlok, Tyagat karma phala tyaga shanti anantaram karma phala tyaga. The only way to get that shanti anantaram, uninterrupted peace, is the phal has to go away. Karma bhi rahega, karta bhi rahega. You cannot deny, because this whole law of karma is like there are three things. There is a karta, there is a karma, and obviously there is a karma phal. So Bhagavan says nobody can live without karma. Even he said in the third chapter, even I am avatar, I am come for a purpose, but I cannot live without karma. I have nothing to do with result, but still I do karma. So when there is a karma, there is a karta, there is a doer. The problem comes when the karma phal is there. So that is the weakness of human being. That is the weakness of a sansari. So that exactly he is saying here. Yagya, dan, tap, jitne bhi cheezein, everything is a karma. And there is a result. अभी दान किया तो where is a for that 501(c) receipt. It's like that. Immediately it comes, oh, receipt किधर है 501(c) की? I had to use in the text. So this is what we are brought up with. Very few of us, and we have to reach to that stage. That is called vairagya. Right? This is an example, receipt, but for everything I do something, I expect something. And that's what is, so that is phalam. तो पुण्य जितने काम अच्छे काम करते हैं उनका पुण्य फलम होता है. And भगवान says योगी इदम विदित्वा, he now this person knows. अभी गीता के 3rd chapter से 8th chapter आने वाले हैं, तो ये स्थिति तो आ जानी चाहिए. अर्जुन सोच रहे हैं कि इसको ये समझ आना चाहिए कि झंझट इस फल में है. And that is the essence. That's what he said. Viditva means by tattva se, through essence. And once you know that, you can transcend all these phal. Karma phal se chhodna, you have to transcend, because you cannot avoid it. You cannot deny it. It is bound to be there. There is a karma, there is a karma phal. So what to do? Jump it. Just jump. जैसे हमारे कभी रास्ते में कुछ आ जाता है, there is a big stone, if you cannot just jump it. And that's a transcendental means jump it. Go beyond that. So that's why he's saying कि jump कर जाता है. And that is, in that state, Bhagavan says, बोला नहीं लेकिन यही बोलता है इस end of this chapter, then you will remember me at the time of death. Otherwise death time पे भी सब याद आएगा कि ये किसी से लिया था, किसी को वो दिया था, अब आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा. All those things come into mind. ऐसा we have read all this, like people who leave there, the whole sansar comes back to you. Especially the past memories come, because there is nothing in the future. When even the old age people, we know that there's future is less, because I don't have anything. When I'm 20, I have a lot of things to plan for 60 years. But when I'm 80, I have nothing much to plan, right? पीछे कहीं जाना है. And then you just rewind your cassette again and again. हम ये करते थे और हम वो करते थे और हमारे पास ये था, तो वही आएगा फिर आके. So that's what Bhagwan is saying. The only way is you have to know tattvata, a sense that, and that is karma yoga basically. We saw that, right? We'll go that. So with that, we'll just move to the 9th chapter. But before that, at the end of the chapter, there is a shlok. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Su Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Akshar Brahma Yogo Nam Ashtamo Adhyayah. Hari Om Tat Sat. So at the end of every chapter, our acharyas have inserted this shlok to remind us. And if you look at the logo I created, which is on our WhatsApp group also, and Brahma Vidya means you are complete. That's it. You're complete. That's what Bhagavad Gita tries to tell us. And then how to reach that completeness, the way to reach that completeness is Yoga Shastra. Yoga is not just
Asana, Surya Namaskar. Yoga means equanimity. Samatvam yoga uchyate, Gita ki bhasha. That's it. Samatvam means equanimity, sthit pragya. The second chapter. We have to go back to all second and third chapter all the time. Second chapter is Sthit Pragya Bhagavan explained in 18 Shlok. Sthit Pragya means the whatever knowledge I have, that is always available to me. Always in the sense, whenever it required, it is available to me. And that is Sthit Pragya. So Bhagavan has already in the second chapter. So Bhagavan, this is like, how do you reach there, Brahma Vidya? Through Sthit Pragya. And how do you become Sthit Pragya? Through practices, Abhyas and Vairagya. Arjuna has asked me. So that's it. Abhyas and Vairagya is the only practice. Gyan is the ultimate Gyan, and Karma go together. Is the only way you reach that state. Here Bhagavan said you become, that is Brahma, that is basically Brahma Vidya. Not Brahma ki Vidya, but Brahma is Vidya. So this Shlok reminds, what are we doing? So Bhagavad Gita is only, Brahma Vidya means ultimately I know Tattvamasi, means I am that Brahman. That's ultimate, I can say that Anand, or ultimate realization. We call it self-realization. But that's what this Shlok reminds. So with that, we'll enter into 9th chapter. So 9th chapter is titled as Raj Vidya. Different books, like different English में title करते हैं, but Sanskrit में Raj Vidya, Raj Guhya Yoga. Yoga is section or chapter. But Raj Vidya, Raj Guhya, दो चीज है. And people call it royal knowledge, kingly knowledge. I mean, we have to translate in English, so we have to translate. But in Sanskrit it is Raj. Raj means royal or the best. अर्जुन ने जो प्रार्थना करी थी, यत श्रेयस स्यात् निश्चितं ब्रूहि. Shreyas means the best of the action, best choice, basically, not the action. Best choice. What is best choice for me? That's what he prayed. So Bhagavan is going to tell him now. जितनी भी चीज भगवान गीता में बताई, it is the best because it is Shreyas he is asked for. So this chapter is Raj Vidya means Shreyas Vidya, or we can say the royal knowledge, the top of the best of the best. And Raj Guhya means secret. And we'll see in this chapter में कि क्या secret, what is he going to reveal to us. बड़ा interesting, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत solid होने वाला है. But one thing we need to understand कि if somebody, and there are sometimes, if you discuss this chapter in isolation, then we won't get anything out of this chapter other than confusion. So all these chapters, third, fourth, fifth are same, but 6 onward, if we read them in isolation, we will get some conflicting understanding. So we have to read second and third, and all these are based on second and third. So so in this chapter, it is Bhagavan is telling the same thing which he said in the 7th chapter, but in a slightly different manner. 7th chapter में Bhagavan apara prakriti means lower nature, higher nature, and he says everything is me. And वहाँ पर he told type of bhakt also but he said everything is me. Me means Bhagavan means the divinity. People call it super consciousness. जो भी नाम देते हैं, हमारे लिए भगवान सबसे अच्छा नाम है कि सब में भगवान है. कितना आसान लगता है. Otherwise you go into philosophy and science, which is good. I mean, philosophy, I love philosophy. But भगवान से अच्छा कुछ बोलने में लगता नहीं. इतना easiest, it touches. क्या है, भगवान है सब में. So that's what. So now he's going to little bit more extra explanation on elaboration on the same thing. And he says, Bhagavan, I'll impart you the knowledge which is for the worldly, the sansar, and which tells you what is Satya, truth, means Bhagavan, Brahman. And by acquiring this knowledge, you will attain freedom from the misapprehension, which is agyan, and that fear of bhaya of this world. So material world, we all have 2 weaknesses. One is we have a fear, मेरा कुछ हो जाएगा संसार से, material world से, I'll lose something. और दूसरा, this is a miscomprehension that world is real. And that's why I say it's a stage. Shakespeare says it's a stage, right? It is impermanent. And we think, oh, this is pakka ho gaya. So that is a
comprehension that पक्का हो गया, there is nothing पक्का in this world. अभी मिल्टन को आना है तो आना है, like you can't stop. Even if United States, which is one of the richest country, put their entire GDP into this project, ki stop Milton, they cannot. So that's a miscomprehension. As I saying है that ki a human being doesn't have a power to even convert one white hair into black. When you grow old and you have gray hair, you don't have a power to forget about the entire coloring this, but one hair you cannot convert from white to black. That much power you don't have. It's small thrills. Then you talk about controlling the world. That is miscomprehension. That is agyan. So Bhagavan कहते हैं that agyan and bhaya, this will remove. And this is very easy. You will read the shlok. This is very easy. Bhagavan says, कितना powerful teacher है. इतना सब बताने वाला, is very easy. And he says it's very easy to even follow, practice, and imperishable. एक बार ये आ गया जाएगा नहीं. लेकिन am I ready to hold this? Am I ready to comprehend this? That is the whole sadhana. So with that, we'll enter into the 9th chapter. Om Shri Paramatmane Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. At Navamo Adhyayah. Ath Navamo Adhyayah. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Idam tute guhyatamam. Idam tute guhyatamam. Pravakshamam anasuyave. Pravakshamya nasuyave. Gyanam Vijnanam Sahitam. Gyanam Vijnanam Sahitam. Yagyatva Mokshase Ashubhat. यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. इसके उपरांत श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा. The blessed Bhagwan said, to you who does not cavil, verily, I shall declare the greatest secret. Knowledge together with wisdom, which having known, you shall be free from evil. So now, Bhagavan, there is a very important word here, is anasuyave. So suyave means the which is grumbling, complaining, unhappy, displeased. All these words means suyave. Asuya hai. Asuya means वो complaining or वो हमेशा दुखी वाला असूय. Anasuya means which is not that. So in simple translation, it is Shraddha. Shraddha makes you anasuya. Otherwise, you are asuya. Asuya means because Shraddha is the only power which will make you, क्योंकि सारा खेल हमारा ये होता है कि when I go to learn something, I have a question that critical. Or asuya means critical also. Always questioning, always doubting. ये सही. So that's why Arjuna, when Shishyas Teham Shadi Mam Tam Papannam. And the entire 13th chapter will read Shraddha. Sorry, 17th chapter. So Shraddha pe Bhagwan baat करेंगे. But Shraddha is very important. So Anasuya means जिसमें Shraddha है, जिसमें complaining nature नहीं. So Bhagwan says, because Arjun, you are that, I'm going to tell you this knowledge. There is a message. Anybody else who wants to learn what Bhagwan told to Arjun, you have to become Ansuya. If you are Ansuya, if you are Asuya, complaining, then your knowledge will not follow. आप भगवत गीता पढ़ते रहिए, कुछ भी हो जाएगा. समझ में तो पहली condition, and that is Shraddhavan. And there is a shlok in 4th chapter, Shraddhavan labate jnanam. ज्ञान का लाभ उसी को मिलता है जिसमें श्रद्धा होती है. So it's a very powerful word. Last time we talked about it. Shraddha means Shat Dharana. Shat means truth and Dharana means like upholding. So if I have a power to uphold the truth, then only I am Shraddhavan. Very, very challenging like task they have given. अगर मैं सत्य नहीं बोल सकता या पालन कर सकता हूँ, तो I can read everything, but अध्यात्म कहता है कि you cannot enjoy that आनंद जिसमें जो ultimate goal है. Satya is the first condition.
हमारे तो गुरु नानक देव ने पूरा शास्त्र उसी पूरे ट्रेडिशंस पे खड़ा कर दिया है। एक ओंकार सतनाम, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत ही सब कुछ है। देयर एंटायर टीचिंग रिमेन, सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग। अनसूय मींस जिसको, हु हैज श्रद्धा, एंड दैट पर्सन, श्रद्धा मींस द अपहोल्डिंग द ट्रुथ, एंड श्रद्धा इज द की एलिमेंट। एक्चुअली Shraddha and Gyan, when they go together, it becomes Bhakti. I mean, if you look at that way. Bhakti means total commitment to anything. It's not just Bhagwan. Bhakti means commitment to any cause, which is, of course, Adhyatma में तो भगवान से बात हो रही है. लेकिन both Shraddha and Gyan, when they come together, it becomes Bhakti. You become a Bhakt. So that's what Bhagwan is saying. कि तब मुझे, and then I'm telling you, because you are entitled, you have the prerequisite. Now I'm going to tell you that Guhyatam means secret knowledge, right? Pravakshami, I'll tell you, Yat Gyatava, the knowing that, this knowledge which this ninth chapter में भगवान will tell all these things. लेकिन आगे तो ऐसा पता लगेगा कि बहुत सिंपल से बता देंगे, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं. इट्स वेरी सिंपल सी बात. मुझे एक कहानी, जब चैप्टर पढ़ता हूँ मुझे वो कहानी याद आती है. कोई एक गांव में एक बार चोरी हो गई थी. मैंने पहले भी शेयर की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है. एक गांव में एक चोरी हो गई थी. अभी पता नहीं चल रहा था कि वो इतना स्मार्ट चोर था कि देयर वाज नो एविडेंस लेफ्ट. सो एंड द थेफ्ट वाज बिग. तो अब कैसे पता करें, पता ही नहीं चल रहा. सबने ट्राई किया. तो किसी ने बोला कि एक आदमी, वो तेनाली रामन की स्टोरी आती थी ना, वही वाज, ये बीरबल किस तरह की स्टोरी रहती है. उन्होंने कहा वो बहुत इंटेलिजेंट है, उससे पूछो, उसको सब पता होता है. अब उससे पूछा है भाई कि तुम्हें जो है राजा को, जो प्रेसिडेंट हो गया, किंग है, उनको बताना है कि चोरी तुम बता सकते हो क्या. अब उसके ऊपर भी चैलेंज आ गया था कि उसको बताना. उसने कहा लेकिन मैं चार्ज करता हूँ बड़ा अमाउंट. मैंने कहा ठीक है दे दो. राजा ने बोले हाँ साहब, ये बहुत, मतलब इसको सब पता होता है, ये वेरी स्मार्ट. तो राजा ने ठीक है, उसको उसको पैसे दे दिए. तो उसने कहा फिर लेकिन मैं राजा के कान में ही बताऊंगा. तो मैंने कहा ठीक है. वो गया और राजा के कान में कहा, राजा साहब मैं बताऊं आपको किसने चोरी करी है. राजा साहब बताएगा. धीरे से बोला चोर ने चोरी करी है. अब उन्होंने बोला यार तुमने उत्तर, बोले आपने मेरा था उत्तर दूंगा, मैंने बता दिया. अब इसमें गलत क्या बताइए, चोर ने ही तो चोरी करी है. इतना सा सीक्रेट. तो इसमें हम ये पढ़ेंगे तो बाद में पता लगेगा इतनी सी बात भगवान बता रहे. इस वेरी सीक्रेट, बहुत छोटी सी बात बताएंगे वो. वो पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ जब करना है तो विल कम टू दैट, राइट. सो भगवान सेज कि यज्ञात्वा, ये जान के यू विल ओवरकम अशुभात मोक्ष से. अशुभात मीन्स अशुभ, अशुभ शब्द से आया है, बट यहाँ पर इट इज एनीथिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड जो हमारे फेवरेबल नहीं होता है, दैट इज अशुभ. बट द एंटायर संसार, ये जन्म जो मनुष्य जन्म मिला, ये तो फेवरेबल होता तो मनुष्य जन्म मिलते ही क्यों. इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं बहुत खुश हूँ. मेरे मतलब आई एम, अदर देन भक्त को छोड़ दीजिए, बट नॉर्मल पीपल लाइक अस, गृहस्थ, कोई नहीं कह सकता कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. वर्ल्ड, नानक दुखिया सब संसार ऐसा कि दिस सर्वम दुखम, बुद्ध कहते थे. तो संसार है, इसका मतलब दुख है. तो भगवान कहते हैं कि ये संसार, इससे तो मुक्त हो जाएगा. अभी दुख तो नहीं जाएंगे. सी दैट भगवान नेवर कंप्रोमाइजेस. ये उल्टे सीधे प्रॉमिस भगवान नहीं करते हैं जैसे ज्योतिष जी और पंडित जी लोग करते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो. कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ये प्रॉमिस नहीं करते. वो कहते हैं मैं तेरे को ये टेक्निक बता दूंगा कि यू विल ओवरकम दिस दुख. दुख तो आएगा पर तू दुखी नहीं होगा. दैट इज द टेक्निक. दुख तो भगवान कोई अर्जुन का नहीं कर पाए, द्रौपदी का नहीं, किसी का नहीं कर सकते. वो बोले कि ये मैं सब नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा कि हाउ डू यू ओवरकम दिस. जस्ट ट्रांजिट, जब कर जाओ, आया तो कूद के निकल जाओ. So that is what he's saying. So that next श्लोक में he'll elaborate a little bit. राज्य विद्या राजगुह्यम, सेकंड श्लोक. पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षागमम धर्म्यम, प्रत्यक्षागमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम अव्ययम. सुसुखं कर्तव्यम्.
यह ज्ञान विद्याओं का राजा तथा सब गोपियों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। The royal knowledge, the royal secret, the supreme purifier is this: directly realizable, righteous, very easy to practice, and imperishable. Yeah, no, कितना बढ़िया प्रॉमिस कर रहे हैं, लाइक जैसे सेल्समैन नहीं होता है, वहां पर जाइए आप टेस्ट प्लान में, दिस इज द परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट फॉर योर हाउस, दिस इज, देखो इंडिया में साड़ी बेचते हैं लोग, नहीं एकदम परफेक्ट, हम लोग कुछ लेने जाए कोट, अरे भाई साहब आपको बहुत जमेगा ये कोट, ऐसा, so he is giving all that कि एकदम फिट है अर्जुन, you don't run away. So he is saying Raj Vidya Raj Guhyam, and this knowledge one, Raj means ultimate, there is nothing beyond that. एक बार ये जान लिया, then you don't need to know anything. पहले भी 7th chapter के भी उन्होंने कहा था, once you know this, you don't, so it's like that if I reach my destination, I don't need any more GPS or any more direction because I reached. So हमारे दयानंद जी जो गुरुजी थे, who used to say very nice quote, he has that without knowledge you cannot conclude. Very powerful है, अभी आप सोचिएगा इस पे, मैं तो मतलब that is one of the mantra for me, मेरे दयानंद जी का बोला हुआ गुरु जी आर्ष विद्या वाले, विदाउट नॉलेज यू कैनॉट कंक्लूड, एंड आफ्टर नॉलेज द कंक्लूजन इज अननेसेसरी. Without knowledge you cannot conclude, but after knowledge the conclusion is unnecessary because knowledge is complete. There is nothing to conclude now. पहुंच गए. So it is like that. That is Raj Vidya. क्या powerful. That is that when we reach that state of ज्ञान, then it is Raj Vidya. इससे ज्यादा तो अब कुछ जानना ही नहीं है, ऊपर अब कहाँ पहुंचेंगे, you are at the top. So that's what Bhagavan says. And he says Raj Guhyam, secret. Anything secret is not easy to achieve. ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वो मैं तेरे को हाथ में दे दूंगा. Secret means you have to do something. जैसे हम लोग if you solve a riddle और हम लोग गेम खेलते हैं like drum charade or whatever, you do something to find out the secret, right? So Bhagavan says Raj Guhyam है, and he says सुसुखम कर्तुम अव्ययम, easy है to करना, लेकिन करना पड़ेगा. See, he is never saying कि I'll just hand over to you. That's the teacher, right? He says कि मैं ये बहुत आसान है, easy है, सुसुखम है, धर्म्यम है, it is confirmed with, in conformity with the dharma. धर्म is जो शास्त्र में नियम बताएं, according to वही उसी से चलेगा ये ज्ञान. ऐसा नहीं कि कोई like कोई किसी ने अगरबत्ती घुमाई और आ गया. That is not Bhagavan is saying. कहीं से very clear Gita is that it is your knowledge. You have to do something to acquire that. So Bhagavan is saying प्रत्यक्ष आवागमन, और you will realize yourself. मतलब ऐसा भी नहीं कोई दूसरे से कहीं से मिल जाएगा. प्रत्यक्ष आवागमन is self realization. That's what we call it, self realization. वहीं से term आई हो. And he says here and here, प्रत्यक्ष में अभी मिल जाएगा, जहां भी होगा. अभी means in the same. That's the reason we use the term जीवन मुक्ति. वेदांत में term आती जीवन मुक्ति, means while living you will come to know what is the आनंद. बाकी तो प्रॉमिस होता है कि स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर ये मिलेगा. वेदांत, हमारा गीता कहती है, वेदांत कहता है नो, स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, पता नहीं, लेकिन गारंटी है कि आपको यहीं पर आनंद आना शुरू हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड जीवन मुक्ति. दैट्स व्हाट भगवान के प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम. ऑफ कोर्स इट इज इन कंफर्मिटी, इट इज अलाइंड विद धार्मिक रूल्स. ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा. धार्मिक रूल मीन्स देयर इज अ शास्त्र गिवन, द नियम जो चल रहा है. जैसे वो ये कि अब भगवान आके नहीं बोल सकते कि ए मिल्टन रुक जाओ. नो, देयर इज अ रूल गोइंग ऑन. वो देयर आर स्टोरीज इन द शास्त्र की भगवान ने कहीं कहीं पर ऐसा किया है कि जरूरत पड़ी तो वहां, बट दैट्स अ रेयर इंसिडेंट. उनको अगर लगेगा कि ये अधर्मम है, then he'll do that. Like for example, Bhishma, Mahabharata. That's a classic example. Bhishma was unstoppable, and Arjun was not able to shoot the arrows on Bhishma because of all these reasons, right? Various, that he's Pitama, and Bhishma was very powerful also. Then Bhagavan said कि अब मुझे
सुदर्शन उठाना पड़ेगा। एंड ही लिफ्ट सुदर्शन एंड केम डाउन। एंड भीष्म बोलेगा ठीक है, अभी आप आ गए तो फिर मैं तो डाल देता हूँ, धनुष मारो मुझे। तब अर्जुन ने बोला, कह रहे आप ही क्या कर रहे हो, आपकी तो प्रतिज्ञा थी। देन ही सेड कि धर्म के लिए प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी तो तोड़ेंगे। सो दैट वाज ही सेइंग धर्म्यम। सो बट वो दैट इज भगवान लेवल पे, हमारे लेवल पे नहीं। एंड सुसुखम, बड़ा आसान है। एंड व्हेन वी गो इनटू द चैप्टर वी विल सी दैट कि क्या है आसान। सो भगवान इज सेइंग एंड ही इज गिविंग द प्रॉमिस। जैसे हमारे पतंजलि योग सूत्र में आसन की परिभाषा है स्थिर सुख आसनम। जब ध्यान, पतंजलि के सूत्र हैं छोटे छोटे, तो अलग अलग परिभाषा है योग की, योग चित्तवृत्ति निरोध, ऐसे संयम की परिभाषा है, नियम की, ध्यान की। तो आसन की परिभाषा स्थिर सुख आसनम, द वन गिव्स यू स्टेबिलिटी एंड सुख मीन्स कंफर्टेबल, दैट इज आसन। अभी बाकी हम करते रहते हैं ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, वो सब मत्स्यासन वगैरह कर लें, दैट्स अ डिफरेंट पोज, अष्टांग। बट आसन की परिभाषा ये है कि जिसमें आपको स्थिरता मिले, जिसमें आपको सुख मिले, दैट इज आसन। सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि बहुत आसान है, बट डिफिकल्ट नहीं। एंड विल सी आगे क्या बताएंगे। सो विल विद दैट विल गो टू थर्ड चैप्टर टाइम, या थर्ड श्लोक, राइट। अश्रद्धाना पुरुषा अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मास्यास परन्तप धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते अप्राप्य माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मृत्यु संसार वतर्मनि। और हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। O Parantapa, men devoid of Shraddha in this dharma, which is the supreme knowledge, without attaining me, return to the path of the mortal world. Yeah, so now he's telling me, पहले जो word use किया था भगवान ने अनसूयवे, that means श्रद्धावान. Now he has used ashraddha, same Sanskrit में there. But so if you don't have shraddha, then you won't get this knowledge. And once you don't get this knowledge, then you are in संसार चक्र, then you don't come to me. ये मेरे को ये जितनी झंझट क्यों आती है, आप बाहर आप किसी गुरु पर चले जाइए, भगवान के सामने खड़े होकर मंदिर में कितनी प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे को दुख क्यों आते हैं। भगवान कहते हैं कि ये दुख इसलिए आते हैं कि ये तुम लोग अश्रद्धा से काम करते हो ना। तो श्रद्धावान को फिर वही, दैट इज अ सीक्रेट, राइट। दुख तो श्रद्धावान को भी आते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होता है, वो इम्यूनिटी। अभी कोविड में हमने क्या किया था, ये जो वैक्सीन लगाया कि अभी कोविड तो नहीं जाने वाला है, इसके वेरिएंट आएंगे तो वैक्सीन लगाओ। चलो जीतू भाई ने एक नई दवा निकाली, ये वाली दवा पियो तो आपको इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कोविड नहीं लगेगा। सो यू फाइंड आउट समथिंग विद इन यू, इम्यूनिटी। सो श्रद्धा इज इम्यूनिटी। इफ यू एंड भगवान ने पहले बोला कि श्रद्धा होगी तो मैं ये नॉलेज भी दूंगा, अगर नहीं होगी तो देन यू मृत्यु संसार वर्तमानी। वर्तमानी में सर्कल, ये जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु तो खैर हमने किसी ने नहीं देखा आज तक, कोई किसी को नहीं मिला है कि वो बोले कि मैं पिछले जन्म में था, अब मैं ये जन्म में हूँ। वो कोई ऐसी छोटी छोटी स्टोरी आती है दैट मेक्स, आई मीन देयर आर नॉट, मे नॉट, आई डोंट नो हाउ ट्रू दे आर, बट नोबडी हैज कम बैक एंड सेड ओ ये किया था तो ये हो रहा है। बट बाय थिंग्स आर हैपनिंग वी कैन इंटरप्रेट। हमारे शास्त्र में कुछ ऐसा हुआ होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दैट्स व्हाई लॉ ऑफ कर्मा है, कॉज एंड इफेक्ट। बट भगवान से इसकी ये ज्ञान अगर चाहिए तो श्रद्धा होनी चाहिए। So there was a teacher, guru, उनके पास लोग आते थे। So one person, one शिष्य was sitting next to him. So one person came and he says, गुरुदेव प्रणाम, oh, where is God? भगवान कहाँ है? सब प्रश्न पूछा उन्होंने। तो उन्होंने बैठा, उसको बैठा लिया और कुछ फिर वो उसको यू सिट डाउन एंड कुछ उसको करने लगे। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आया, कोई जरा थोड़ा एग्नोस्टिक टाइप का था। वो आके उसने पूछा, जेंटलमैन, मेरे आई हर्ड दैट यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, सो जेंटलमैन टेल मी वेयर इज गॉड। तो उन्होंने उसको बोला कि देयर इज नो गॉड, यू गो होम। अब जब वो पता एग्नोस्टिक वैसे ही उसका क्वेश्चन था, उन्होंने जब आर्ग्यूमेंट देयर इज नो गॉड यू गो होम, तो वो चला गया। उसने कहा तो उस शिष्य ने जो बैठा था उसने पूछा, यार गुरुजी ये आदमी आया था, इसको आपने बैठा दिया, इसको माला दे दी, जो भी उसको ला दिया, वो अपनी साधन में लग गया, उसको आपने मना कर दिया, ये क्या है? अभी इसको तो आपने बोला नहीं, इसको तो बोला आप बैठे हैं भगवान
प्रार्थना करो भगवान बताते हैं कहाँ है, उसको आपने बोला भगवान ही नहीं है, ये कैसा है? तो उन्होंने कहा कि आप हैव यू ऑब्जर्व द टोन? दिस गाय केम, ही सेड गुरुदेव भगवान कहाँ है? उसको ये तो श्रद्धा थी कि भगवान है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो दैट्स वाज हिज प्रश्न। वो जो दूसरा आया था वो तो मान के चला था भगवान नहीं, वो मेरे से आर्ग्यूमेंट करने आया था, बट वो तो एग्नोस्टिक लाइक और मे बी एथिस्ट टाइप, भगवान है ही नहीं। तो उसने मुझे वेयर इज गॉड, इस क्वेश्चन वाज आप लोग बोलते हो, तो आई सेड देयर इज नो गॉड, देयर इज नो पॉइंट देयर। या सो श्रद्धा होगी तो ज्ञान विल बी फलित, ऐसा कहते हैं, या इट विल बी शॉवर्ड, राइट? श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान दैट्स व्हाट इज, अश्रद्धा नाम, वो चक्कर में पड़ते रहोगे। अश्रद्धा होगी तो ये घूमते रहोगे साइकिल में, दुखी दुखी। साइकिल में वही दुख, रोज सुबह शाम उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर शाम को फिर दुखी होकर सो जाएंगे, फिर शाम को कुछ सोते समय प्रार्थना करेंगे, फिर सुबह फिर कुछ थोड़ी प्रार्थना करेंगे, दिन में फिर दुखी हो जाएंगे। दिस इज अ साइकिल। दैट्स व्हाट भगवान से, मृत्यु संसार वर्तमनी। ये मृत्यु, मृत्यु से मतलब यहाँ पर सिर्फ डेथ से नहीं है, जो भी नॉन फेवरेबल है वो संसार है। तो ये इसमें उलझे रहोगे, तो दैट्स व्हाट भगवान से विद दिस। उन्होंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया कि अर्जुन में बताना। अब नेक्स्ट श्लोक, या वी हैव फ्यू, एक श्लोक और पढ़ते हैं, देन वी कैन नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू, राइट? बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि श्रद्धा इज द की। क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है, देन श्रद्धा पे तो बहुत, अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट देयर इज अनदर एग्जांपल गिवन, वी कैन रीड नेक्स्ट श्लोक लेटर, बट इट्स वेरी वेरी, श्रद्धा शब्द आता है तो मुझे मेरे बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में, बड़ा प्यारा, आई मीन I know many of you, we Shraddha शब्द आता है तो your hair raise on the stand, right? It's very, there is invisible power Shraddha. There is no definition, or there is no like ये ऐसी श्रद्धा होती है। हम सबको किसी पे श्रद्धा होती है तो it is invisible connection, it is invisible स्नेह, it is invisible honor, it is invisible respect। श्रद्धा के बहुत सारे। So it is like, for example, it's like a magnet. The magnet, if it is lying on the ground, you don't see the magnetism. The moment there is an iron piece goes close to the magnet, magnet will just pull it. But you don't see the magnetism. Shraddha is like that. You भगवान के पास अगर हम श्रद्धा जाऊंगा तो खींच लेंगे. But you don't see that, right? So that is, that magnetism is श्रद्धा. वो मेरे पास भी होनी चाहिए, और if I am ready, then it will just pull me. Or I'll pull भगवान, or भगवान will pull me. Doesn't matter, either side. But that is invisible power. That's why इस भगवान ने शुरू में बोल दिया कि बिना श्रद्धा के ज्ञान। So yeah, it's almost we are at the, we'll read next slok next time, but let's do our dhyan. So next इस चैप्टर भगवान जो 7th चैप्टर में बताया, just elaborate that in everything it is me. सब कुछ इस संसार में जो है उसमें मैं हूँ. That's what he's going to 7th chapter में जो बताया था, little different way he's going to tell, but it is the same, that same joy, right? लेकिन वो बस वही रहस्य है, उसी को समझना है। तो वो एक विल स्टॉप हियर, एक गाना है, वो राज कपूर की पिक्चर मूवी का नाम है ये, वो चांद खिला वो तारे हंसे वो रात अजब बतवारी है, समझने वाले समझ गए जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो ये अभी का चांद, उस गाने में तो बताया कि चांद और तारे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि प्यार भाव, खूब प्यार। उस गाने में एक लाइन भी है कि प्यार का संदेश है ये चांद जो खिला हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें उसमें उसको देख ही नहीं रहे हो, समझने वाले समझ गए, जो समझेगा वो उसका आनंद ले लेगा चांद तारे का, और देन यू कैन लिव अ लाइफ ऑफ प्यार की जिंदगी। लेकिन जो ना समझे वो अनाड़ी है, जिसको समझ में ही नहीं आया हो ये चांद तारे क्या कह रहे हैं, वो अनाड़ी है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि इतना आसान है, इतना इजीली अवेलेबल है कि अगर आप चाहो तो उसका आनंद ले सकते हो, अगर ना समझे वो अनाड़ी। अदरवाइज संसार वो मृत्यु संसार आवर्तनी, दैट अनाड़ी अश्रद्धा। सो we'll stop here, do our ध्यान, and then we'll continue next time with 4th and 5th. So they are very 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 powerful shloka right here. So again, dhyan is same, which is from the 6th chapter, I think. Same, it is coming. So the reason dhyan we every time do that, because that is